Good to have you again. Hi Shubham, hi Ritika, hi Prachi. Okay, everybody is joining. Hi Udbasata, good to have you again. Good. I'm liking the spirit, after doing questions, studying for almost an hour. If you are really willing to do reading comprehensions, that's very, very promising. Good, very good. So today we are going to, try and solve as many questions as you can do on your own, right? The passage is tricky, but now it's the time, since you have had good exposure, try to solve as many questions as possible on your own, right? So that should be the agenda, where I would be successful as a mentor, where your dependency on me reduces to a greater extent. So that's what we are going to aim today. So before we begin, let me quickly introduce myself. My name is Juhi Narula. I have 12 years of experience in training students for CAT, GMAT, and GRE. I also happen to be a life skills coach and a content creator. I've done my bachelor's in technology and master's in business administration. This is the Telegram channel, so please join the Telegram channel to get the notifications about the upcoming sessions and classes. So Sheetal has joined. Hi Sheetal. Apart from our wonderful sessions on YouTube on our channel CAT for MBA that happen, where I take every day at 8 p.m., there are a lot of other interesting sessions that happen. We also offer you special classes that you're a part of, and we offer two subscriptions that we call Plus and Iconic. So, what are the features of Plus? There are live classes, there are weekly tests, the courses are structured. उद्बस्ता आज एक करेंगे, right? So basically I'll be starting with the plus course soon. So here my number of hours have slightly got down. So like I was discussing yesterday, either we do two passages alternate days, or we do one passage every day. So everybody suggested that the momentum will go if we do one passage every day, right? So that's what we are planning. Okay. So apart from the plus, so what are the features? Live classes, weekly tests, structured courses, and unlimited access. We also have other subscription that we call Iconic. So that has all the benefits of plus. Apart from this, you have a coach who's going to handhold you. There's a customized study plan. There is detailed study material offered. Test analysis is done. Expert guidelines are there. So all this really contribute to enhance your scores in the exam. Okay, so if you're going for plus subscription, the fees is 16,400 for 6 months. For 12 months, it is 22,550, and for 24 months, it is 32,800. And if you're going for Iconic, the fees for 12 months is 39,500. For 24 months, it is 59,999. You can use the code J and Live 10 to get a 10% off on any of the subscriptions. Okay. This is another feature, Ask a Doubt, which I'm sure you must have started using. So you can go to Ask a Doubt, select the question, crop the image, and select the section from where the doubt is coming from. And every Sunday, please do appear for the combat. That gives you a holistic understanding of your performance. Very, very important. Enroll using the code JNLive10. चलो, so this is on British colonial policy. बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है, भले आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इंसाइट मिलेगा, तो एक बार आप पढ़ो. और लाइक आई वाज सेइंग बिफोर यू बॉयज जॉइंड, शुभम, विनायक, गोविंद एंड उशान, सो आई वाज टॉकिंग टू द गर्ल्स दैट इस टाइम वी विल रीड इट इन सच अ वे. आप टाइम लेकर करो, बट जितना इंडिपेंडेंटली कर सकते हो उतना करो. आई वुड वांट यू टू ड्राइव द आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज, सो स्टार्ट डूइंग इट. हाँ उद्बस्ता, they are good books. At this point of time while you are preparing, मुझे ऐसे लगता है उद्बस्ता, in everybody,
दैट आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो दैट्स गोइंग टू डेफिनेटली रीप इन बेनिफिट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, यू कैन, यू शुड. बुक होती है तो यू नो, of course you'll buy a book, you'll read it, you'll solve some questions, so कर लो. ऐसा कोई ज़्यादा it's not very expensive either, you buy the books. D230, we are solving a passage from CAT 2019. You can also join us. This is the first page of the passage. ऑसिलेशन ये एक फिनोमेना होता है फिजिक्स का, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा. ये सेंटर है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सो मूविंग. Okay, wow, Prachi, that's very quick. Good. When you are doing this passage, try to just give a quick summary of how the flow of ideas is happening here, if possible. Prachi, या तो create कर लो या फिर you can put it in the comment section, जैसे भी. And rest of you, Sheetal and Udbisata, Ushan, Vinayak, let me know once you are done. Okay, Vinayak has also done. Sheetal has done. Anybody who's still doing? Ritika? Okay, Ritika is done. She's saying slight confusion is there. So let's get started. So British colonial policy went through two policy phases. So there are two policies that colonial, आप समझते, colonies बनाई थी. There were two strategies between which it policies oscillated. तो दो strategies थी, एक ये strategy थी, एक ये strategy थी. तो कभी ये इधर जाते थे, कभी इधर जाते थे, right? So at first the new colonial apparatus set up exercised caution, matlab care, and occupied India by a mix of military power and subtle diplomacy, the high ground in the middle of circles. So पहले situation पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने military power को भी use किया, diplomacy को भी use किया to acquire power. This, however, pushed them into contradiction. तो पहले what did they do to set up their colony there? They used military power and subtle diplomacy. This, however, pushed them into contradictions. For whatever their sense of strangeness of the country, so they were new to the country, right? And the thinness of colonial presence. So utna colonial presence was not that prominent. The British colonial state represented the great conquering discourse of yes. नहीं colonial नहीं रितिका, मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो. This, however, pushed them into contradictions. For whatever their sense of strangeness of the country and the thinness of colonial presence, the British colonial state represented the great conquering discourse of enlightenment rationalism. तो ये क्या represent कर रहा था? ये discourse is basically giving knowledge of enlightenment rationalism. और ये किस टाइम एंटर किया? जब इट वॉज एट अनचेक्ड एरोगेंस ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट अनचेक्ड एरोगेंस. गुड 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 रितिका, गुड. apparatus is set up. साइंस की लैब्स में apparatus होता है ना आशुतोष?
ठीक है. सो दिस इज वन थिंग दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट कि एक तो ऑफ कोर्स मिलिट्री पावर और सटल डिप्लोमेसी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये कॉन्ट्रोडिक्शंस में पुश हो गए, और जो भी इनकी सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस थी और थिननेस ऑफ कॉलोनियल प्रेजेंस थी, ये उस टाइम आप इसने ब्रिटिश स्टेट ने रिप्रेजेंट किया ग्रेट कॉन्करिंग डिस्कोर्स. तो मतलब ये रैशनलिज्म लेकर आए, और प्रिसाइसली तब लेकर आए व्हेन इट वाज इट्स ग्रेटेस्ट अनचेक्ड एरोगेंस. As inheritors and representatives of this discourse, which carried everything before it, colonial states could hardly adopt for long such a self-denying attitude. It has restructured everything in Europe. तो इन्होंने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग करी है यूरोप में. सो द क्वेश्चन कैन कम कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के इम्प्लीकेशंस क्या थे, या पॉजिटिविटीज क्या थी, या रिजल्ट्स क्या थे. द प्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिटिकल रेजीम्स, तो किधर क्या क्या कैसे कैसे रीस्ट्रक्चर किया है, मे बी यू कैन राइट इट. यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है, राइट. रेजीम्स इज पीरियड्स, ठीक है, द पॉलिटिकल पावर्स. And would do the same in India, particularly as some empirically inclined theorists of that generation considered the colonies a massive laboratory of utilitarian or other theoretical experiments. तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने यूरोप में बहुत चेंजेस किए, क्योंकि यूरोप भी देयर वाज अ कॉलोनी. यूरोप वाज आल्सो यूटिलिटेरियन, कम्स फ्रॉम द वर्ड यूटिलिटी, सो बेनिफिशियल, या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स करें. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली द कॉलोनियल स्टेट्स कुड नॉट सिंपली सेटल फॉर, नहीं, यूरोप में उन्होंने करे, और इट हैड रीस्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग इन यूरोप, एंड दे वांटेड टू डू द सेम इन इंडिया. ओशान, it had restructured everything in Europe, what it was restructured that has been talked about, and would do the same in India. Clear hai, Oshan? Consequently, the colonial states could not simply settle simply for eminence at the cost of its marginality. It began to take it began to take initiatives to introduce the logic of modernity. तो इंडियन सोसाइटी में उन्होंने मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए. पर ये मॉडर्निटी एक पैसिव सोसाइटी, पैसिव इज डोरमेंट, जहां पे बहुत एक्शन नहीं हो रहा, उस सोसाइटी में नहीं एंटर किया था. इट्स इनिशिएटिव्स वर रेजिस्टेड. तो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स लेकर आए वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल फॉर्म से, हाँ, स्टबर्न टाइप के, तो यहाँ पे रेजिस्ट किए गए. देयर वाज अ मोर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कलेक्टिव रेजिस्टेंस. जो कलेक्टिव, यानी देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर रेजिस्टिंग इट टुगेदर. Therefore, the map of continuity and discontinuity that this state left behind at the time of independence was rather complex and had to be traced with care. So I hope आपको flow of idea समझ में आ गया. हाँ, मैं आशुतोष बताती हूँ. देखो, ब्रिटिश कॉलोनी, या श्योर, ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसी वेंट थ्रू टू पॉलिटिकल फेजेस. एक तो ये कंट्रोल करना चाहती थी, और दूसरा ये क्या करना चाहती थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी. तो इन्होंने पहले रीस्ट्रक्चर किया था यूरोप को, और इंडिया में भी वो सेम करना चाहते थे, बट यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला. क्लियर है क्या हो रहा है पैराग्राफ में? मतलब मोटा मोटा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट. अब प्राची, कैन यू एक्सप्लेन द बिगनिंग पॉइंट? तो दो पॉलिसी फेजेस हैं. एक तो थी एक्चुअली समटाइम्स टू ग्रेटर एडवांटेज. एक तो जो कॉलोनियल सेटअप किया उसको क्वेश्चन पे रखा, जहाँ पे कंट्रोल रखने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रडिक्शंस पे लेकर है, और दूसरा दे वांटेड टू ब्रिंग इन सम मॉडर्निटी इन द सिस्टम. प्राची, इज इट क्लियर? और आशुतोष बोल रहे यूटिलिटेरियन. तो ये एक्सपेरिमेंट करके आए थे यूरोप से, इंडिया में भी करने चाहते थे. तो इंडिया कैसे कंसिडर किया गया, या उसकी कॉलोनीज कैसे कंसिडर करी, जो यूटिलिटेरियन या थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट जहाँ पे किए जा सकते थे टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स. आई होप द फ्लो ऑफ आइडिया इज क्लियर टू एवरीबडी. कैन वी प्रोसीड है? रितिका, आपको कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया? गुड शीतल, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. चलो विनायक, ठीक है, चले. गोविंद ने भी ज्वाइन किया था. इट्स क्वेश्चन इज फॉर एवरीबडी हु इज अटेंडिंग द क्लास. ओके, चलो रीड दिस. क्या रिकॉर्डेड है आशुतोष? हाय, आई एम गुड, आई एम गुड. आप कैसे हो आशुतोष? व्हाट इज रिकॉर्डेड? आई डोंट नो.
चलो गुड गुड बढ़िया. तो let's do the second paragraph of the passage. These classes you can see again. Ineradicably, this comes from the word eradicate. Eradicate होता है remove करना, और उसके आगे in लगा दिया तो meaning will change. Okay, good, Oshan, very good. Hi Pratibha, Mohit, we are doing CAT 2019 का एक reading comprehension. This is the second paragraph. Vinayak has also done. What about girls? Have you done? What about others? Good, Ritika. Udbisata, Sheetal. Sheetal has done. Good. What about others? Whoever is attending the class, the question is for everybody. It is. It is. So slightly difficult there, right? Good, Saurabh. Very good. Most significantly, of course, initiatives for modernity came into assume an external character. So, they were externally, ऐसा लग रहा था somebody is, bringing about this. So, of course, Britishers were trying to bring it to external character feel हुआ. The acceptance of modernity came to be connected irradicably with subjection. So, everybody had a different opinion. This again point out to two different problems. So, what were the two problems? The question can come and you can come here, right? Theoretically, because modernity was externally introduced, it's explanatory unhelpful to apply the logical format of transition process to this pattern of change. So this is one point. Such a logical format would be wrong on two counts. So what on the two counts this format would be wrong? First, however, subtly it would imply that was proposed to be built was something like European capitalism. तो जो आप चेंजेस लेकर आ रहे थे, जो मॉडर्निटी को इंक्लूड कर रहे थे, वो आपको ऐसा लग रहा था कि इट इज रॉन्ग ऑन टू काउंट्स. पहला काउंट दिया कि इट वाज समथिंग लाइक यूरोपियन कैपिटलिज्म. ठीक है. तो हिस्टोरियंस ने इसको कैसे फोर्सफुली आर्ग्यू किया दैट इट वाज टू रिप्लेस वाज नॉट लाइक फ्यूडलिज्म विद और विदाउट मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स. So, they were trying to, somehow get an understanding in Indian context. But more fundamentally, the logical structure of endogenous changes does not apply here. Here, transformation agendas attack as an external. So, जो भी transformation थी, people were a little hesitant to absorb it because they were seeking like it that external forces trying to, enforce changes. It is inscribed in every move, every object, every proposal, every legislative act, each line of causality. It comes to be marked on the epoch itself. Epoch matlab era, period itself. This repetitive emphasis on externality should not be seen as a nationalist initiative that is so well rehearsed in India's social science. So whatever they were doing, Indians were having this mindset that they are external people and they were not very welcoming to it. I hope this is clear. ये क्लियर है ये पैराग्राफ. बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं है. प्राची अब क्लियर है आपको? रितिका, प्राची, यू वर हैविंग सम कंफ्यूजन. चलो गुड शीतल, गुड ओशान. चलो गुड रितिका, वेरी गुड. गुड प्राची. चलो
Good, Ritika. Very good. So Ritika has done good. Let's see who all have completed. Ushan has done. Good, Saurabh. Very good. Good, Vinayak. So, quite apart from the externality of the entire historical proposal of modernity, some of its contents were remarkable. मतलब आप कितना भी कह दो, of course, to what India is, a lot of, slightly off topic, but a lot of contribution has been that we were under Britishers. So they did introduce a lot of reforms which were beneficial. राइट हाँ, आप पॉजिटिव टोन आ गई है, तो ये कह रहे हैं कि आप जितना भी बोल रहे हैं कि एक्सटर्नलिटी ऑफ द एंटायर हिस्टोरिकल प्रपोजल ऑफ मॉडर्निटी थी, कुछ कंटेंट्स रिमार्केबल थे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ऑल्टरेशंस, और इट डिड नॉट एनी वे हार्म, राइट, एक्स्ट्रा एक्टिव एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स. सो कहाँ एम्फेसिस हुआ. ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, राइट. What happened was the creation of degenerate version of capitalism. Development of underdevelopment. तो उतना development हुआ नहीं because there was a lot of resistance shown by the countrymen. I hope the flow of idea is clear to everybody. अब आपको आई एम श्योर पैसेज समझ में आया होगा. वी आर इन अ गुड स्टेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि ब्रिटिश कॉलोनी colonial policy क्या थी. दे वर ट्राइंग टू use military power and diplomacy. Then they were trying to bring enlightenment. They had already restructured everything in Europe. They wanted to do it in India also, but then they were outsiders, so there was a lot of resistance faced. Again, what are the points or grounds of resistance, that is explained, and ultimately at the end they are saying that these whatever modernity they were trying to bring in did benefit, but then this was development of underdevelopment. I hope the flow of ideas is clear to everybody. Now let's do some questions. So karo. All of the following statements about British colonialism can be inferred from the first paragraph except that. So if you would like to see the options, you would want me to go back. नहीं, देखो, यूरोप मॉडर्निटी से तो ड्रिवन है. देखो एक बार जस्ट क्विकली टेक अ लुक. सी नहीं होगा उशान. यूरोप मॉडर्निटी से ड्रिवन है. रीस्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग इन यूरोप. समझ में आया उशान? सी नहीं होगा आंसर. हाँ, ऑप्शंस देखो. सो वाज एन आउटकम ऑफ एनलाइटनमेंट, ये बात हो रही है. एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ इंडियन मॉडर्निटी को फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं एक्सप्लेन करा है. D230 देखो बेटा, पार्शली एनलाइटमेंट ऑफ रैशनलिज्म, इसकी तो बात करी है ना उन्होंने. डिस्कोर्स ऑफ एनलाइटमेंट रैशनलिज्म देखो, दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट. ठीक है, इज दिस क्लियर? और उसके बाद रीस्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग इन यूरोप, दे वांटेड टू डू इट इन इंडिया आल्सो. सो partly this is also there. Allowed the treatment of colonies as experimental sites. जहाँ पे apparatus का मतलब पूछा था मुझसे आशुतोष ने, तो B will be the answer. Is this clear? विनायक, थोड़ा ट्रिकी पैसेज है. सबको समझ में आया? क्विकली गिव मी अ थम्स अप. पोल यहाँ पर करेंगे. समझ में आया कि B will be the answer? ट्रू अगर आ गया, फॉल्स नहीं आया. चलो, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट. गुड, ठीक है. मैम, एक्सपेरिमेंटल वाला कहाँ पर है? आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? इसमें किस पॉइंट की बात कर रहे हो? कॉलोनीज एज एक्सपेरिमेंटल साइट्स, डी पॉइंट की. हाँ, ये देखो. And would do they did it in Europe and would do the same in India, particularly as some empirically inclined theorists of that generation considered the colonies a massive laboratory of utilitarian or other theoretical experiments. Ritika, और D230 आपको दिख गया?
D230 आपको दिख गया? आपका नाम क्या है बेटे? ये D230 बड़ा वेरी डिफिकल्ट टू. I hope this is clear now. So B will be the answer, right? Come to this. So ये आप without reading the options, ये आपको without going back to the passage ही करना पड़ेगा. All of the following if true could be seen supporting the argument. So कौन सा statement argument को support नहीं करेगा? That's what we are looking for. So the introduction of capitalism in India was not through the transformation of feudalism as happened in Europe. Yes. अच्छा, you are Baba the traveler. अच्छा, अरे वाह, कहाँ से आ गए आप travel करते करते? So this has been talked about, right? We can keep this. Modernity was imposed upon India by British and therefore led to underdevelopment. So yes, ये तो कह ही रहे हैं, development of underdevelopment. Throughout the history of colonial conquest, natives have often been experimented on by the colonizers. So yeah, this has been talked about. मतलब इसको support करेगा idea को. The change in British colonial policy was induced by resistance to modernity in Indian society. तो ये support नहीं करेगा. So D is the answer. Is this clear? Oshan was able to answer it straight. है. I hope Ritika is also clear. Prachi, Sheetal, Udbisata, Vinayak. Clear है सबको? Yeah, it was straight. Good. Good, good. So let's move to the next question now. Good, Shubham. Very good. ये करके देखिए. Consequently, the colonial state could not settle simply for eminence. Eminence is something which is noteworthy that can be, considered. As the cost of its marginality, it began to take initiatives to introduce a logic. Which one of the following best captures the statement? तो जो colonial states थे उनको लगता था they are not a part of it. So what did they try to do? They tried to bring the modernity in the system so that कैसा marginality का trend ना हो, things bring together, come together. Correct Udbisata, bang on, very good. Correct Oshan, बिल्कुल ठीक है, शाबाश. C is the answer. Yes, correct. Correct Shubham, बिल्कुल ठीक है, very good. सौरभ आपका सी आ रहा है, कृतिका का भी सी आया, शीतल आपका सी आ रहा है, बाबा द ट्रैवलर D230, सी आ रहा है सबका? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो विल गो अहेड. प्राची, एनी डाउट्स एनीबडी? यस और नो? चले आगे. The colonial state's eminence was unsettled by marginal position. No, no. So the colonial enterprise was a costly one. So no. The colonial state felt marginalized from Indian society because of its own modernity. Yes, Shubham. Therefore, it sought to address that marginalization by bringing modernity to change. So yes, could not settle for eminence. It began to take initiative. So see, yes. The cost of colonial states' eminence was not settled. Cost was not settled. The trap answer choice है. ठीक है, so the correct answer is going to be C. I hope it is clear to everybody. Good Pratibha, very good. Good Prachi. Chalo, let's do question number 4. So see this, which of the following 5 word sequence the best capture? तो ये तो colonial policy थी, military power से तो start नहीं कर सकते. उन्होंने कहा था military power भी है और they were trying to be smart also. So they were playing with democracy also. I mean, नहीं colonial policy, enlightenment, ठीक है. So okay, B तो आप लोगों का straight ही आ गया. Correct है B, बिल्कुल ठीक है. Correct. बाबा the traveler है शुभम. Colonial policy, enlightenment, external modernity, subjection and underdevelopment. So yes, B is the right answer. So see, आपको समझ में आने लग जाएंगे. You'll start getting accuracy if you're really working hard.
Very good, everybody. Everybody was able to answer it correctly without my involvement, and that's what I wanted. चलो fifth करो अब last. इंडोजीनियस होता है इंटरनली. इंडोजीनियस चेंज का क्या मतलब होता है? इंटरनल. एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे आई थिंक फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं तो. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. करेक्ट है सौरभ, बिल्कुल ठीक है, शाबाश. वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड. करेक्ट उद्बस्ता, बिल्कुल ठीक है. करेक्ट बाबा द ट्रैवलर, वेरी गुड. डी इज द आंसर इंडीड. वेरी गुड. करेक्ट है प्राची. गुड ओशान. प्रतिभा आपका भी आ गया डी. गुड गुड एवरीबडी, वेरी गुड. देखो आपको कितनी डिफिकल्टी हो रही थी ना रीचिंग टू क्लियर आंसर्स. डी इज एब्सोल्युटली द आंसर. कोई वेरिएशन नहीं, अनडिबेटेबल है. बिल्कुल ठीक है ओशान, बिल्कुल ठीक है. ठीक है जी. सो वील क्लोज टुडेज सेशन. देन आई होप यू फाउंड बोथ द सेशंस टू बी यूजफुल. तो कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. देन एज डिस्कस्ड यू नो tomorrow is what Thursday, right? We had sort of two sessions today. So we had one at 8 where we did para jumbles, and another was at 9 where we did reading comprehension. And anyways I will soon be starting with the plus classes. तो मेरे पास या तो दो choices है, मैं आपका alternate day sessions लूँ, Monday, Wednesday, Friday or something of this sort, या I take every day. I mean I feel every day basis पे you are practicing everything and we stay more connected, तो उस पे exposure better रहता है. ठीक है. इवनिंग में आ जाओ, समरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एट 8 PM. प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग हियर आल्सो स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड हाँ सौरभ, 9 वाला तो वी आर कीपिंग इट इंटैक्ट, राइट? So 9 o'clock to milenge. 8 o'clock when I plan to keep two classes some days, so I keep an extra one at 8. Right. So about the cat iconic program, I've already told you there are such amazing features. So professional help always help. मुझे लगता है investment है जो लाइफ लॉन्ग आपको बहुत बेनिफिट करता है. Right. So as far as the fee structure for 6 months is concerned for iconic 25,800. आप अगर compare करेंगे with other institutes which are offline, you'll see it. There's a huge difference here. Relatively it's very less, the fees. Iconic for 2 years is 59,999. 18 months के लिए plus subscription is available 28,550. And अगर आप CAT और campus recruitments दोनों को target कर रहे हो, so this is the plan for 12 months and 6 months. Okay. और YouTube में कुछ inappropriate लगता है तो YouTube के वीडियो में लिंक होता है डिस्क्रिप्शन पे, so you can report it there. Okay. So thank you so much for your participation and it was so Ritika, I need to check. मैं चेक करके बता दूंगी आपको. ठीक है. So please keep working hard, stay consistent. It was good to see so many students coming for both the sessions. Very good. आप 8 बजे उठ गए क्लास अटेंड करने आए. Very encouraging. ठीक है. So please keep working hard. Let's work together and let's just do the best that we can. All the best. Have a great day ahead. See you in the evening at 8 PM. God bless you. Please take care.